और कॉर्पोरेट के लिए पीएलआई लाएं, नई तरीके से टैक्स इंसेंटिव्स दें, जो भी इंसेंटिव्स दें, जॉब्स जॉब्स जॉब्स, जॉब का नैरेटिव बदलना भारत सरकार के लिए बहुत जरूरी है। और इन 3 बिंदुओं पे 3 सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। युवा, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट दर जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिखी 10% है, अभी भी वो कंफर्टेबल जोन में नहीं। ओवरऑल इकोनॉमिक दर 3-4, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3-4% है, लेकिन यूथ में 10% की अनएम्प्लॉयमेंट दर है, जो कि रेड फ्लैग है। इस पे जो अरुण ने बात की ना, वो जब आप कह रहे थे सरकारी वर्सेस प्राइवेट कर रहे हैं, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति फिर से होती जा रही है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से बेहतर लगनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा 90 के दशक में और इस सदी की शुरुआत में प्राइवेट नौकरियों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ रहा था और वही सही दिशा लग रही थी। और ये अब वापस अगर आप सरकारी नौकरी बेहतर लगने लग गई है तो इसका मतलब है कि कहीं दिक्कत है। दो फैक्टर्स हो गए हैं। एक तो जॉब सिक्योरिटी प्राइवेट में बहुत नहीं, जॉब सिक्योरिटी पहले भी नहीं थी। नहीं, अब और कम होती जा रही है। बड़ा इसको अनपैक करिए आमिर जी, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये रिफ्लेक्शन है। एक तो जैसा पहली बात हुई, प्राइवेट सेक्टर 45 साल का व्यक्ति या 50 साल का व्यक्ति या 40 साल 42 साल का व्यक्ति, अगर वो 1 लाख रुपए या 60,000 रुपए की 70,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उसको आप जॉबलेस कर देंगे, उसको दूसरा व्यक्ति जॉब नहीं दे रहा, वो कहां जाएगा? देखिए, बट परिवार है देखने के लिए। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन समस्या बल्ज की है, पॉपुलेशन बल्ज की। जो जेन ज़ी आ रहा है और उसको नौकरी नहीं लग रही है, वो सबसे बड़ी पैनिक की स्थिति है भारत सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिर मैं आता हूं एक मूलभूत समस्या पे। पॉपुलेशन हमारी समस्या है, डेमोग्राफिक चेंज हमारी समस्या है, उस पर हम काम नहीं करना चाह रहे ना। और राहुल गांधी भी उस पर बोलना नहीं चाहते। राहुल गांधी हर विषय पे बोलते हैं, आप बोलिए डेमोग्राफिक चेंज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, वो हार्मफुल है और वो भारत को नीचे धकेल सकता है आने वाले युगों के अंदर। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। हम पॉपुलेशन पे नहीं बात करना चाहते, हम डेमोग्राफिक चेंज पे बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ ये बात करना चाहते हैं कि देखिए अभी सरकार को नौकरी दे देनी चाहिए। सरकार 100 जॉब क्रिएट करेंगे, आप जनसंख्या 120 ले जाएंगे। सरकार 125 जॉब क्रिएट करेगी, आप जनसंख्या 155 ले जाएंगे। तो समस्या जो है वो चूहा पहले जीतता है या बिल्ली पहले जीतती है, समस्या यही है। तो हमको कंट्रोल करनी है अपनी पॉपुलेशन, सबसे बड़ा है। लेकिन पॉपुलेशन भी एक रैशनल मैनर में कंट्रोल करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, चाइना ने करा है, लेकिन चाइना एक ऑटोक्रेसी है, हम एक डेमोक्रेसी है, हमारे लिए टफ है ये चीजें। ये तब बड़ी चीजें हैं, लेकिन उसका एक सोशो इकोनॉमिक इशू भी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी पॉपुलेशन कंट्रोल करती है। इकोनॉमिक TFR कम हुआ है, 1.8% है हिंदुओं का जी। तो ये नहीं, आपकी बात सही है। मुझे लगता है जरूर इस पे कुछ वर्ग का ज्यादा है, उनको आप चाहे ज्यादा पढ़ाएं या उनके लिए रोजगार पैदा करें, ताकि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो जहां पे 2.89 के आसपास उनका जितना होता, कम से कम आप जो डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है, जो आपने बाहर के लोग यहां जाके बसाने का प्रयास आपने कर चुके हैं, वो आ चुके हैं, वो सब लोग कहां, उन लोगों को आप कैसे मैनेज करेंगे? बिल्कुल, अभी जो आंकड़े आए थे उसमें 2-3 स्टेट को छोड़कर बाकी पॉपुलेशन ग्रोथ तो स्टेबल हो गई है। सिर्फ 2-3 स्टेट में परिसीमन होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा, आप केरल के अंदर, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर वहां सीटें नहीं बढ़ने जा रही हैं, सीटें बढ़ेंगी यूपी में, सीटें बढ़ेंगी एमपी के अंदर, क्योंकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ बिहार में बढ़ेंगी। तो ये डिस्पैरिटी ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत बड़ा हो गया है। उत्तर भारत की पॉपुलेशन, उत्तर और सेंट्रल भारत की पॉपुलेशन दक्षिण से ये परिसीमन में ये बहुत बड़ा इशू यही आने वाला है। बिल्कुल होगा ये साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया की। भाई साउथ इंडिया की सीटें नहीं बढ़ेंगी, इसका मतलब ये कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल करे वो तो नुकसान में रह जाए, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाएगा सेंट्रल। दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब। केरल हैज डन गुड जॉब, तमिलनाडु हैज डन गुड जॉब। इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत रीजनेबल है। लेकिन आप उल्टे आप बिहार में आके देखेंगे, यूपी में आके देखेंगे, आपको पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं, पर और क्यों है? उसकी वजह सिर्फ डेमोग्राफिक चेंज, वो दूसरी भी वजह है जो मैं कह रहा था, सोशियो इकोनॉमिक इशू। बिकॉज वहां पर कैपिटा ग्रोथ ही ज्यादा है। तो पर कैपिटा ग्रोथ ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम हो रही है। तो आपका मेन टारगेट पर कैपिटा ग्रोथ बढ़ाने का जी। लेकिन अब से कुछ 5 मिनट बाद बजट का भाषण शुरू हो जाएगा और बजट का भाषण आपको न्यूज 18 इंडिया पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस बजट पे क्या क्या होने वाला है हम आपको एक्सक्लूसिवली बता चुके हैं कि मिडिल क्लास को राहत मिल सकती है, किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है, यह बड़ी खबर है। लेकिन पॉपुलेशन को लेकर भी मुझे लगता है कि कुछ बड़ा ऐलान बजट के अंदर कर सकती है सरकार, यानी एक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ सकती है।
बड़े ऐलान जिनकी उम्मीद की जा रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, अश्विनी जी कह रहे हैं 75,000 रुपए, उम्मीद 1 लाख रुपए तक की जा रही है कि 1 लाख रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाए। इस तरह की अगर हेडलाइंस आती हैं मिडिल क्लास के लिए, तो वो अपने आप में बजट का जो फील गुड फैक्टर है वो बढ़ा सकती हैं। टैक्स में छूट, बड़ी छूट जो दिखे, छूट जो लगे कि हाँ वाकई छूट है, छूट जो ऐसी ना हो जो लगे कि एक बार तो लगे कि आई और फिर दूसरे जेब से लगा कि चली गई। तो कुछ इनोवेटिव डिडक्शन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लोन पर डिडक्शन है 1,50,000। अब हाउसिंग सेक्टर को उतना जोर नहीं दिया जा रहा है क्या, जैसे जिस तरीके से हाउसिंग लोन पे दिया जा रहा था? नहीं, वो हर बार की बात होती है कि सर इसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अल्टीमेटली पहुंच वहीं जाते हैं कि डिडक्शन कितनी दें। तो फिर ये बात आती है, अच्छा चलो इस चीज की तो हो गई, अब इस चीज की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की होनी चाहिए। तो 1,50,000 रुपए की जो बात हो रही है वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में मिलती थी, तो उसकी बात आ रही है कि उसको न्यू रिजीम में शिफ्ट कर दिया जाए, कम से कम इसको भी दिया जाए। तो हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त उछाल देखा गया है पिछले, अब इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर है हाउसिंग सेक्टर की ग्रोथ। आप उसमें देखिए क्रेडिट की जो ग्रोथ हुई है, जितना बैंक क्रेडिट है उसका करीब 1/3% सिर्फ हाउसिंग में जा रहा है। तो प्रोडक्टिव से ज्यादा हाउसिंग में जा रहा है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हमने बैंक की क्रेडिट की बात की, बैंक की डिपॉजिट का भी एक इशू बना हुआ है। बैंक्स को डिपॉजिट्स की जरूरत है, तो बैंक्स को अगर डिपॉजिट की जरूरत है तो वहां पर क्या हो सकता है ऐसा बजट में जो उस दिशा में डिपॉजिट की तरफ जा सके। आपकी बात सही है, और डिपॉजिट्स अगर नहीं रहेंगे बैंक में, सब शेयर बाजार में चले जाएंगे, तो बैंक की जो पूरी जो इकोनॉमिक्स है वही बैठ जाएगी। तो फिर वो आगे क्रेडिट कैसे देंगे, तो ये एक समस्या है। बट मुझे लगता है हम लोग क्या बैंक डिपॉजिट्स को इनकम टैक्स से जोड़ा जा सकता है, कुछ डिडक्शंस को? मुश्किल है, नहीं वो तो नहीं करेंगे। मुश्किल है। वो कर देंगे तो फिर तो मिडिल क्लास पे जबरदस्त मार पड़ जाएगी। नहीं, मतलब अगर आप बैंक में डिपॉजिट करें उसी पे, क्योंकि एक ये बड़ा जो चेंज आया था बैंक इंटरेस्ट पे टैक्स लगाने का, जो चिदम्बरम साहब के टाइम में आया था, वो अभी तक चला जा रहा है, और वो कंप्लायंस में भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, खासकर मिडिल क्लास के लिए, जिसको सिर्फ अपनी स्टेटमेंट ये इसलिए निकालनी पड़ती है और उस पर टैक्स देना पड़ता है। चाहे इंटरेस्ट तो टैक्सेबल है आज भी, बैंक इंटरेस्ट के ऊपर बस छोटी सी रिबेट मिलती है टीटी में, अदरवाइज तो बैंक रेट तो आज भी टैक्सेबल है। लेकिन आपको मैं थोड़ा 3 साल पहले लेके चलता हूं। इस देश का मिडिल क्लास कुछ खरीदता है तब टैक्स देता है, बैंक में पैसे रखता है तब टैक्स देता है, जो सैलरी मिलती है उस पर टैक्स देता है। नहीं देता नहीं है, ले लिया जाता है। जब वहां रखते हैं तब ले लिया जाता है, जब आता है तब ले लिया जाता है, मतलब टैक्स ले लिया जाता है, और वो टैक्स उससे पूरा देश चलाया जाता है लगभग। और कॉर्पोरेट टैक्स आता है, उससे पूरा देश चलाया जाता है। और फिर मिडिल क्लास अगर बोले कि हमें थोड़ी राहत दे दीजिए तो फिर कहता है सोचेंगे, लेकिन थोड़ी ही मिलेगी, उसकी उम्मीद भी एक तो गलत लगाता है। मिडिल क्लास को लगता है कि चारों तरफ से टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, बट उम्मीद पहले नॉर्मलाइज करें, रैशनलाइज करें, थोड़ा बहुत टैक्स रिबेट पे जरूर। देखिए मिडिल क्लास उम्मीद जरूर हर चीज में बड़ी लगाता है, लेकिन उसको पता है मन महसूस के रह जाता है। नहीं, जो वो अमेरिका से आई जो कहावत है ना, वो एक बार फिर याद कर लेनी चाहिए जब से बजट भाषण शुरू हो, कि दुनिया में, इस जीवन में 2 ही चीजें निश्चित हैं, मृत्यु और टैक्स। जी, तो अब देखते हैं वो टैक्स जो है निश्चित तो है, लेकिन उसमें कितनी कमी आती है, क्या कुछ राहत मिलती है। बस ये भाषण शुरू होने वाला है, 10:59 हो चुके हैं। देखिए बजट भाषण शुरू होने से पहले मृत्यु की याद दिला दी है। लेकिन मतलब आप जीवन में क्या लेकर आए हैं और क्या लेके जाना है, इसलिए अगर कुछ ना हो तो चिंतित ना हो। आप लेकर कुछ भी आए हो, लेकर सरकार को ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब से कुछ मिनट बाद बजट का भाषण शुरू होगा और न्यूज 18 इंडिया पर आप इसकी हिंदी में कवरेज देखेंगे, यानी आपको सरल भाषा में हम बताएंगे कि बजट में निर्मला सीतारमन क्या क्या ऐलान कर रही हैं, वो क्या क्या ऐलान कर रही है, उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी न्यूज 18 इंडिया की है। इसलिए आज आपका चैनल न्यूज 18 इंडिया इसलिए जरूरी है क्योंकि बजट में क्या क्या हो रहा है, आपका फायदा कहां हो रहा है, आपको बताएगा सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया। अब से कुछ मिनट बाद संसद की कार्रवाई शुरू होगी और बजट भाषण देंगी निर्मला सीतारमन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समूची कैबिनेट, बीजेपी और एनडीए के तमाम सांसद, विपक्ष के तमाम सांसद, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, तमाम लोग इस समय संसद के परिसर में मौजूद हैं और टकटकी लगाए पूरे देश के साथ। पूरे देश का सदन भी बजट को ही देख रहा है। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर इस समय सदन में आते हुए नई संसद का यह पहला आम बजट है, नई नवेली संसद का। माननीय सदस्यगण, मुझे अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से
अंतर संसदीय संघ IPU की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मान्य सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise
of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework, about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation
will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee and the employer with respect to the EPFO contribution in the first 4 years of employment.
The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards the EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. $1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice, saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up. Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments
and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in a growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Act, Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth. Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham,
North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country will have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund. Mudra loans.
the limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in trades. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the trades platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs to enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets. E-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, बैठिए. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be facilitated in PPP mode with VGF support
and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing, and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged. In addition, enabling policies and regulations
for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide the required fiscal support.
Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh,
suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata Temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty natural landscapes and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating market become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneurship,
and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with the states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Services to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms. Financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote currency for overseas investment.
NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23,
we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production,
I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% tedious rate on many payments is being merged into the 2% tedious rate, and the 20% tedious rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. Tedious rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay
years up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for tedious defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending in appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors.
Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore
that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes, will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अपना बजट पेश किया और बड़ी बातें ये, अगर टैक्स की बात की जाए तो नई टैक्स रिजीम में 50,000 से बढ़कर 75,000 रुपए कर दी गई है स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा। 50,000 रुपए हुआ करती थी, वो 75,000 रुपए। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स, 7 से 10 लाख तक 10%। स्ट्रक्चर बदला है न्यू टैक्स रिजीम में। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यानी 0 से 3 लाख तक 0%, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। अगर आपकी सालाना आय 3 से 7 लाख तक है तो 5%, 7 से 10 लाख तक है तो 10% टैक्स लगेगा और 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नौकरी पेशा लोगों के लिए होती है, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी जो सालाना आय है उस आय को 75,000 रुपए कम करके टैक्स आका जाएगा। अगर आपकी सालाना आय 10,75,000 है तो वो 75,000 कम करके 10 लाख रुपए मानी जाएगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में होता है और उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, जो नई टैक्स रिजीम में स्लैब्स में बदलाव हुआ है। बड़ा ऐलान इनकम टैक्स में। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता था। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, वो स्लैब वहीं रह रहा है। लेकिन 3 से 7 लाख तक अब 5% टैक्स लगेगा और 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो बड़ी घोषणा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन को, यानी कि आप नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 रुपए और कम होंगे उनकी सालाना आय से टैक्स कैलकुलेट करने के वक्त। इसके अलावा बड़ी घोषणाएं बिहार के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, बिहार के लिए कई तरह की योजनाएं जिनमें कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम अब आपके सामने स्क्रीन्स पर है। 0% 3 लाख तक, यानी 3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं। न्यू टैक्स रिजीम में 10 से 12 तक 15% और 15 लाख से ऊपर 30% जैसा पहले हुआ करता था वही है।
लेकिन अंदर जो स्लैब्स हैं 15 लाख तक, उनमें थोड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे आपकी सालाना जो टैक्स जो बनता है उस पर फर्क पड़ेगा। 10 से 12 लाख तक 15% और 15 से ऊपर 30%। नई टैक्स रिजीम में ये बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन में जैसा हमने आपको बताया, ये बदलाव किया गया है कि वो 50 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये बदली हुई नई टैक्स रिजीम है आपके सामने स्क्रीन पर। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा 30%, जैसे पहला हुआ करता था। तो अगर आपकी सालाना आय 10 लाख है तो 10% ही टैक्स लगेगा, यानी 1 लाख रुपए उस पर टैक्स बनेगा। 10 से 12 लाख है तो 15% टैक्स लगेगा, यानी 10 लाख तक 10% और उससे 10 से 12 के बीच में अगर आप जितना होता है उसका 15%, फिर 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज़्यादा 30%। हम टैक्स एक्सपर्ट से इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कैलकुलेशन किस हिसाब से बैठेगा आपकी आय जिसे बनती है। हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो रहेंगे। सेंसेक्स इस वक्त गिरावट देख रहा है। सेंसेक्स में शेयर बाजार में गिरावट दिख रही है, लगभग 1.5%, 1.5 से 1.25% के बीच में इस वक्त दोनों निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं वो नीचे चल रहे हैं। निफ्टी लगभग 1.64% नीचे चल रहा है इस वक्त और लगभग 1.5% नीचे सेंसेक्स है। 80,000 के नीचे आ चुका है सेंसेक्स। निफ्टी भी 24,000 के स्तर के आसपास है, 24,085 पर इस वक्त निफ्टी चलता हुआ। सेंसेक्स 79,276 की 276 इस वक्त सेंसेक्स। तो बदली हुई टैक्स रिजीम सामने है आपके, इसके हिसाब से क्या कैलकुलेशन बैठता है ये हम इसकी हम बात करेंगे। अश्विनी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात क्या देखते हैं आप इसमें? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं सुबह कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बदलाव रेट्स में आने वाला है। तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं आया है। तो चूंकि, और मैंने दूसरी बात कही थी, अगर आपको ध्यान दो कि पॉलिसी में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे जी, तो जितने चेंजेस दिख रहे हैं वो पॉलिसी फ्रेमवर्क में दिख रहे हैं। कितने हैं, क्या है, वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल जो छोटा मोटा चेंज टैक्स में किया है, 2 चेंजेस समझ में आए। छोटा सा रिलीफ दिया है और काफी बड़ा ले भी लिया है वापस। जो दिया है वो अभी आपने जैसा बताया कि आपका जो रेट है 3 से 7 लाख पर, तो न्यू टैक्स रिजीम में वो 5% है। वो 5% है। पहले 3 से 6 पे 5 था, हाँ, अब वो 3 से 7 पे 5% हो गया। और पहले 6 से 9 था, अब वो 7 से 10 पे 10% हो गया। हाँ। और पहले 9 से 12 पे 15% था, अब 10 से 12 पे 15% हो गया। तो 12 से 15 सेम है, 10 से ऊपर जो है वो तो सेम उनको बराबर है। 10 से ऊपर 10 लाख से ऊपर जो टैक्स था, 10 लाख सालाना आय से ऊपर जिनको टैक्स जितना देना था वो उतना ही, कोई बदलाव नहीं है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। 10 लाख से नीचे ही थोड़ा सा बदलाव है, बदलाव आया है। 1 लाख रुपए जो बढ़ा दिया है लिमिट, जो स्लैब में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उसका जो फर्क पड़ेगा 17,500 रुपए पड़ेगा। अब हम टेबल में कैलकुलेट करते हैं कि वाकई वो ठीक स्टेटमेंट है या उसमें भी कहीं कुछ झोल है, अभी पता लगेगा। दूसरी बात जो की है गड़बड़, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट में, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रेट है वो बढ़ा दिया गया है। अब पहले 10% होता था, अब जो आप कह रहे थे कि ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो वापस तो मत लीजिए अभी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से 20% हो गया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% हो गया। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में डील करते हैं उनके लिए थोड़ा सा 10 लाख रुपए जिसकी सालाना आय है उसको 10 लाख रुपए तक असर पड़ा है जी। तो अगर 10 लाख रुपए सालाना आय है, पहले न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स था जी? पहले देखिए 3 से 7 में दोबारा बताता हूं, 0 से 3 लाख तक जीरो था, तो यानी 0 से 3 तक जीरो था, वो अभी भी जीरो है। तो अगर हम पुरानी की बात करें, 10 लाख रुपए अगर आपकी सालाना आय थी, जो पुराने रिजीम नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 10 लाख रुपए अगर आपकी आय थी जी, तो 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता था। 3 से 6 पे 5% था। 3 से 6 यानी कि 3 लाख रुपए पे 5%, यानी कि 15,000 रुपए जी, 15,000 रुपए वो। फिर 6 से 9 पे 10% था जी, यानी 30,000 रुपए जी, 3 लाख पे। तो 15 और 30 45,000 रुपए जी। और 9 से 12 पे 15%, हाँ, तो यानी 9 से 10 पे 15% था, तो 45 और 15 60,000 रुपए जी।
मोटे तौर पर अभी जो था 10 लाख रुपए की सालाना आय पे 60,000 रुपए टैक्स बन रहा था जी। अब जो है इस नए स्लैब के हिसाब से 3 लाख तक फिर जीरो है, जीरो हो गया, और 3 से 7 लाख तक 5% है, यानी 4 लाख पे 5% 20,000 रुपए, और 7 से 10 पे 10%, 7 से 10 पे 10%, अब 10% हो गया, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए, तो 20 और 30 50,000 रुपए, पहले था 60,000 रुपए जी। तो 10 लाख रुपए जिसकी आय थी उसको 10,000 रुपए बचा, 10,000 रुपए का फायदा है जी। अब अगर वो नौकरी पेशा है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी फर्क आ गया है जी। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपए था जी। अब 75,000 रुपए, तो 25,000 रुपए वो और कम हो जाएंगे जी। तो वो 25,000 रुपए अगर ऊपर वाले स्लैब से, मतलब वो जो 10 लाख जो 15% वाला स्लैब है जी, उससे कम होगा जी। तो 25,000 का 15% और कम हो जाएगा, जी। 25,000 का 15% हुआ आपका 3,750 रुपए, तो ये 13,750 रुपए का फर्क पड़ा जी। तो वो 17,000 का फर्क कैसे पड़ रहा तो है? वो कुछ और भी बीच में आएगा अभी, और जो फैमिली पेंशनर है उनको भी 15,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 25,000 रुपए हो गई जी। ये दो फायदे हो गए। हाँ, तो दो ये कुल मिला के मतलब लगभग 10 स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर आप जो बढ़ाया गया है उसको आप रुपी टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो 7,500 के आसपास का जो फिगर आ रहा है, इसलिए कुल मिला के 17,500 का फायदा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 10,000 का आपने कंप्यूटेशन किया, स्लैब का जो चेंजेस हुए और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के चेंजेस हुए मिला के करीब 17,500 रुपए। नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के ये 3 फैक्टर्स का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। एक तो जो स्लैब्स में चेंजेस आए हैं, हाँ, एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50 से 75,000 किया गया है, और एक जो पेंशन की डिडक्शन बढ़ाकर 15 से 25,000 किया गया है। तो अगर आप इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट लें तो लगभग वो 16,500 17,000 के लगभग आ रहा है। जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 पेंशन की डिडक्शन, पेंशन की डिडक्शन को 15,000 से, मतलब पेंशन की डिडक्शन का मतलब ये होगा कि पेंशन में जितना पैसा जाता है, नहीं ऐसा है, इसमें 2 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, या तो सैलरीड को या फैमिली पेंशनर्स को पहले 15,000 मिलती थी उनको 25 मिलेगी, तो वो तो उन दोनों में से एक ही होगा। हाँ, तो वो तो उन दोनों में या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या पेंशन डिडक्शन मिलेगी। यस, अगर पेंशन ले रहे हो तो आपको डिडक्शन 15,000 मिलती थी, अब 25 मिलेगी। आप सैलरी ले रहे हो तो पहले 50,000 मिलती थी, अब 75,000 मिलेगी, ये फर्क है। तो फिर दोनों में से एक मिलेगी। हाँ, दोनों में से एक मिलेगी, तो फिर 17,000 कैसे होगा? देखिए ना, जो 50,000 अगर किसी की 10 लाख सैलरी है, 25,000 का जो उसको एडिशनल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, अगर वो नहीं मिलता तो वो टैक्स स्लैब में जाता, वो किस टैक्स स्लैब में जाता, आप उसके हिसाब से उसका अमाउंट, अगर 10 लाख है तो वो 15% वाले टैक्स स्लैब में जाता और ऊपर वाले में जाता, क्योंकि 10 की अगर एग्जैक्ट 10 लाख है तो 10 लाख से 12 लाख की ब्रैकेट में चला जाता। अगर वो अगर आपकी सैलरी, अगर आपकी सालाना आय 10,75,000 है, समझ लीजिए जी, तो वो 20% वाले स्लैब में 20% में चला जाता, तो उसका मिला के 5,000 रुपए होता है, 25,000 रुपए का एडिशनल। ठीक है, तो वो 10,000 प्लस 5,000 15,000 का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं शायद जो 17,500 कैलकुलेशन में आएगा तो पता लग जाएगा कैसे 17,500 रुपए हुआ। हाँ, तो मतलब लेकिन मोटा मोटी जो हमने कैलकुलेट किया उतना ही मिलेगा। हाँ, कि आपको 10,000 रुपए का तो वहां बेनिफिट मिलेगा, और प्लस मोटे तौर पर 10,000 रुपए का बेनिफिट तो मिलता ही है, 10 लाख के स्लैब में मिलता ही है। और क्योंकि स्लैब वाला बेनिफिट है तो वो तो आगे तक सबको मिलेगा। सबको मिलेगा जी। तो 10,000 रुपए ये साफ मान लिया जाए कि 10,000 रुपए 15,000 मानिए आप, लगभग 10 लाख के ऊपर वाले जितने भी सैलरी उनको 15,000 तक का फायदा होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह हाँ, तो अगर वो 25,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन है एडिशनल, वो 30% वाले स्लैब में जाता है, वो तो वहां से भी रिड्यूस ही होगा ना। हाँ, बिल्कुल होगा, तो सब जगह से रिड्यूस होगा, वहां से भी रिड्यूस इसलिए वो होगा, मैक्सिमम ले रहे हैं उसका, तो वो 7,500। हाँ, मैक्स ले रहे होंगे, इसलिए ले रहे हैं तो वो 7,500 रुपए हो गया, मार्केटिंग है ये। 10,000 प्लस 7,500 पर 17,500 हो गया। हाँ, अब किशोर जी तो को समझ में 15 लाख से ज्यादा जिनकी आय है उनको 17,500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, उनको 17,500 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। तो 17,500 रुपए का मतलब लगभग 1,500 रुपए महीना लगभग कह सकते हैं। हाँ, मतलब 18 होता तो 1,500 हो जाता, माने तो 10 से 17,500 का बेनिफिट सरकार ने तो सबको, हाँ, सबको ये बिल्कुल रजत ने बिल्कुल सही बात कही कि जो मोटे तौर पर हेडलाइन है टैक्स के लिहाज से, टैक्स बचत के लिहाज से, वो ये है कि सबको जो भी टैक्स देते हैं उनको 10 से 17,500, जो 10 लाख से ऊपर है, जो 10 लाख के ऊपर है, जो 10 लाख से नीचे कम रहेंगे हैं, उनका तो 10,000 रुपए नहीं बचेगा जो ना। 10 लाख से कम है उनका स्टैंडर्ड डिडक्शन
जो बढ़ रहा है 50 से 75,000, उसका बेनिफिट तो मिलेगा। उसका बेनिफिट मिलेगा, तो लेकिन आप मान के चलिए थोड़ा सा वो जो टैक्स का जो स्लैब रेट चेंज हुआ है उससे भी थोड़ा सा बेनिफिट थोड़ा, हाँ, जो भी टैक्स देते हैं उनको थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। जो 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सालाना आय है तो सबसे ज्यादा 17,500 रुपए आपका मैक्सिमम बेनिफिट है। मैक्सिमम बेनिफिट जो है, मैक्सिमम टैक्स जो बच रहा है वो 17,500 रुपए साल का बच रहा है, अगर आपकी सालाना टैक्सेबल आय 15 लाख से ज्यादा है। अगर 15 लाख से लेकिन कम अब है, आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बड़ा है, दो इसमें वो न्यूट्रलाइज करेगा ना आपके टैक्स सेविंग को। दो उसमें नुआंसेस हैं। ऐसे भी पिछले बार के बजट में आप देखें 7 लाख तक का इनकम तो ऐसे भी टैक्स के बाहर था जी। अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें तो 7.5 लाख, तो आज इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के अब 7,75,000 तक। नहीं तो वो जो 7 लाख रुपए 7 लाख तक बाहर था वो तो अभी बाहर रहेगा, वो अभी बाहर है, वो अभी बाहर है। तो इसके बीच में जो पढ़ रहे हैं यानी कि 7,75 से ऊपर जिनकी इनकम है उनको ये एडवांटेज मिलना शुरू होगा। तो लगभग अगर आपकी आय 60 से 65,000 रुपए है प्रति महीना, तो आप टैक्स लिमिट के बाहर हैं इंडिया में। और 60 से 65,000 अगर आप इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखें और हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो 60 से 65,000 सब्सटैंशियल अमाउंट है। 2 साल पहले ये अमाउंट काफ़ी कम था। LTCG में एक और नुआंस है, जो सर कह रहे थे कि 10 से 12% बढ़ाया है, वो बात सही है, लेकिन एक एग्जेम्पशन मिलता था 1 लाख रुपए तक, कि अगर आप 1 लाख रुपए तक का स्टॉक वो 1.5 लाख हो गया, वो 1.25 लाख हो गया, 25,000 बढ़ाए हैं। तो 25,000 बढ़ा है। तो मतलब जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको तो प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा गेन नहीं है, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 1 से 1.25 लाख तक की गई है। तो 7 लाख तक तो टैक्स नहीं देना था, जो सारे कैलकुलेशन लगा के स्लैब्स के बाद भी वो अभी भी वही स्थिति है। 7 से 10 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना आय है तो आपको थोड़ा फायदा होगा। 10 लाख से ऊपर है तो 10,000 रुपए तो मिनिमम फायदा है ही। 15 लाख से ऊपर है तो 17,500 रुपए का फायदा है कुल मिलाकर। 17,500 रुपए का कुल फायदा है। मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मनोज, 15 लाख से ज्यादा आय है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है टैक्स में वो 17,500 रुपए का हो रहा है सीधा सीधा, और ये वेतन भोगियों को हो रहा है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्हीं को मिलेगा। हमारे साथ किशोर हमारे साथ भोपाल में महिलाएं हैं और इनमें जो उत्साह है, क्योंकि मैं देख रहा था जब बजट को देखते हुए काफ़ी उत्साह इन महिलाओं में था। जो भी सामने बात आ रही है कि जो आपको जो टैक्स की नई रिजीम आई उसको लेके आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, टैक्स पे रिजीम में तो मिला जुला है, काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने स्लैब्स चेंज की हैं वो एक टैक्स पेयर के लिए बहुत वेलकमिंग है। बिकॉज जितने भी जो टैक्स पेयर्स हैं इंडिया में, दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। बहुत सारे जो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास के हैं वो टैक्स पे नहीं करते हैं, अपर मिडिल क्लास को भी बेनिफिट मिल जाता है। तो मेन जो मिडिल क्लास है उसके लिए जो टैक्स बेनिफिट्स उन्होंने रिजीम वो चेंज किया है, दैट इज़ वेलकमिंग जो। लेकिन आप लोगों की खुशी की वजह क्या थी कि महिलाएं, ऐसा लग रहा था जैसे बजट आप लोगों के लिए पेश हुआ है? जी, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि महिलाओं के लिए बजट हुआ है। जो महिलाओं से संबंधित सारी चीज़ों को तो छूट मिल गई है। आप सोना चांदी सस्ता हो गया है, अरे ज्वेलरी सस्ती हो गई आपकी, आर्ट हो गई हमारी। पहले अभी हम सोचने लगे थे कि हम गोल्ड सिल्वर खरीदें या नहीं खरीदें, लेकिन आज के बजट को देखते हुए तो महिलाओं का पहला रिएक्शन भोपाल से में आ रहा है। मुजफ्फरनगर में किसानों का क्या रिएक्शन है, प्रशांत? जी, और जिस तरह का ये बजट आया है, निर्मला सीतारमन ने 1,52,000 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित करने की बात कही है। पीछे लहलहाती फसलें हैं, ज़्यादातर गन्ने के किसान यहाँ पर हैं मुजफ्फरनगर में, जो देख पा रहे हैं हम इस समय, हमारे सहयोगी दिख रहे हैं, और कुछ ऐसे ही गन्ना किसान हैं। लेकिन अब नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है, दलहन तिलहन को और ज़्यादा बढ़ावा मिले, उसमें आत्मनिर्भर हो। इस तरह के कदम को आप कैसे देखते हैं? देखो, आज जो ये फैसला लिया गया है एग्रीकल्चर के कृषि विभाग के लिए, ये उन्होंने अगर ये जो बजट निकाला है आज उनके बधाई के पात्र हैं। और आप नेचुरल फार्मिंग आप भी करते हैं? नेचुरल फार्मिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सरकार से निवेदन सिर्फ ये है असली कि अगर आपने जो ये बजट पास किया है, ये पात्र किसानों तक योजना का उसे लाभ मिले, जो गवर्नमेंट की सही योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई जाती है, और वो बिचौलवा खत्म हो गया, पात्र लोगों तक, पात्र लघु सीमांत किसानों को वो योजना मिले। हमारा बार बार यही कहना है, क्योंकि सरकार के द्वारा अच्छी योजना तो चलाई जाती है लेकिन धरातल पर आकर वो शून्य हो जाती है। चलिए, मुजफ्फरनगर से फिर संसद भवन की तरफ चलते हैं। अमित पांडे वहां पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं अमित? देखिए, यहाँ पर अब
अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोगों से बात की तो उनका यही कहना है कि जो बजट है इसमें युवाओं का खास ध्यान पे रखा गया। और क्यों रखा गया है, क्योंकि 10 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता की बात कही गई है और इसके अलावा इंटर्नशिप जो 500 टॉप कंपनियों में युवाओं को इंटर्नशिप दी गई है, वो इसको ये अहम कदम मान रहे हैं। इसके अलावा अगर किसान की बात करें, जैसा किशोर आपके किसानों के लिए भी अहम ऐलान किए गए हैं। मसलन उनकी क्रेडिट फैसिलिटी को लेकर किया गया है, साथ ही साथ उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे उनके प्रोड्यूस आते हैं तो उसको जो उसमें फैक्ट्रीज बनाने का काम है या फिर उनके उत्पादों को अच्छा बाजार मिल सके, उस पे भी बड़ा ऐलान हुआ है। और अमित उधर मॉल में अनुपमा और रीमा मौजूद है, उनके पास भी चलते हैं। वहां कुछ ग्राहक हैं क्या अनुपमा? बिल्कुल किशोर, देखिए कोशिश हम जरूर कर रहे थे कि कुछ लोगों से हम जरूर बात कर पाएंगे, लेकिन ट्यूसडे का दिन है, क्योंकि वीकडेज का दिन है। अभी भी आप देखेंगे तो मॉल में सिर्फ आपको स्टाफ ही नजर आएंगे। एक आधा दो लोग जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे हमने कोशिश जरूर की बजट के बारे में बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा कि इंतजार करिए रीमा, कि जब बजट आएगा उसके बाद बात करेंगे। तो खैर अब ये अगर हम फिर स्लैब्स पे चले जाएं और स्लैब्स पे 8 लाख रुपए अगर 8 लाख रुपए है सालाना आय, तो 8 लाख रुपए पे कितना टैक्स बन रहा है अब नए हिसाब से? अगर हम जैसे 3 लाख तक तो जीरो है, 3 लाख तक जीरो, 3 से 7 लाख 5%, 5%, तो 4 लाख का 20,000 रुपए हो गए, 20,000 रुपए हो गए, और 7 से 8 10%, 10,000 रुपए, 30,000 रुपए हो गए, 30,000 रुपए टैक्स बनता है। अब इसमें सेस वगैरह जोड़ के 31,200 बन जाता है टोटल। हाँ, 31,200 सरचार्ज लगा के 31,200 बच जाता है। ये नए रिजीम में, आज वाले बजट के बाद और अभी तक जो था वो था 36,400 टोटल बनता था, जो न्यू रिजीम में था, अर्लियर जो लाई गई थी। तो 36,400 के बजाय अब 5,000 का फायदा हुआ, 5,200 का मोटा फायदा हो गया मिडिलमैन। 5,200 का, ये 8 लाख रुपए तक की आय पे। और 9 लाख है तो 9 लाख के बाद जैसे 10 लाख है, 10 लाख में अर्लियर था 62,400 का टैक्स। अब न्यू रिजीम आज जो आई है उसके हिसाब से 52,000 बन जाता है। तो टोटल डिफरेंस जो हमारा 10,400 का मिडिल मैन को बेनिफिट हो जाता है आज की रिजीम। मिडिल मैन को नहीं, मिडिल क्लास को, मिडिल मैन को तो फायदा देना ही नहीं है। तो 10,400 रुपए का फायदा हो जाता है। 10,400 रुपए अगर 10 लाख है और 5,200 रुपए, 5,200 अगर 8 लाख रुपए, उसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट और देना है, 25 स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ, मैं रोक रहा हूं आपको, किरण रिजिजू क्या बोल रहे हैं वो सुन लेते हैं। इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने एली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है, ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग जानबूझ के बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं, उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या है। इन्होंने बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा?
अखिलेश यादव, विपक्ष का जो रिएक्शन है वो आपने सुना, किरेन रिजिजू क्या बता रहे थे वो सुना। आंध्रा और बिहार की खास बात हुई है बजट में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर 11 लाख पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है? 11 लाख पे अर्लियर जो टैक्स रिजीम थी न्यू वाली 78,000 रुपीज आता था। आज जो प्रेजेंट हुई उसके हिसाब से 67,600 हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। तो मोटा मोटा 10,400 रुपए का बेनिफिट होता है। नहीं तो 10,400 10 लाख में भी है और 11 लाख में भी है। यस सेम, क्योंकि रेट रिजीम स्लैब जो है वो सेम है। 5 to 7 वाले में रहेगा, 12 लाख तक सेम रहेगा ना। 12 लाख तक सेम रहेगा, उसके बाद फिर 15 लाख के बाद और बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो 17,500 का फायदा होना उसमें अप टू लगा है। हाँ, अप टू 17,500 रुपए का फायदा मिडिल क्लास को इस स्लैब। और ये शेयर मार्केट में जो गिरावट देख रहे हैं वो जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एफएन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे है, ट्रांजैक्शन टैक्स प्लस जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा है। देखिए, एक तो एफएनओ को वैसे भी टारगेट करने की इकोनॉमिक सर्वे ने भी बोला है, आरबीआई से भी सब लोग बोल रहे हैं कि ये जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग हो रही है, जिस स्तर पे ट्रेडिंग हो रही है, बड़ा स्पेकुलेटिव मार्केट है। वहां डबल कर दिया टैक्सेशन 0.01% से 0.02%। उसकी वजह से मार्केट स्पूक हुई है। दूसरा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की वजह से जो 12.5, जिसकी आशंका हम लोग सुबेरे भी बात कर रहे थे कि ये चीज बढ़नी थी। बहुत दिनों से काफी हद तक लो रेट्स पे थे, 10% काफी लो है इंटरनेशनली कंपैरिजन के हिसाब से भी। तो ये बढ़ना था। अच्छा हुआ कि 15% नहीं किया, जिसकी अनुमान ज्यादा मार्केट लगा रही थी, 12.5%। लेकिन दो चीजें जो मुझे लगता है कि स्टार्टअप सेक्टर के लिए और ओवरऑल जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो सिग्निफिकेंट है, एक तो एकदम क्लियर टर्म्स में वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि आई अबॉलिश द एसेट द एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत दिनों से डिमांड थी कि एंजल टैक्स एक बहुत बड़ा थॉर्न है स्टार्टअप इन्वेस्टिंग इंडिया में। तो आई थिंक ये अगर जो लोग स्टार्टअप सिस्टम से नए आते हैं उनको समझाएं तो एंजल टैक्स है क्या? जो अगर मैं कोई नया स्टार्टअप शुरू करता हूं और मेरे बिजनेस में कोई कंट्रीब्यूट करता है एज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट, और कुछ दिनों के बाद वो अपना इन्वेस्टमेंट्स का कुछ पोर्शन विड्रॉ करना चाहता है, तो उस पर एक टैक्स लगता था। यानी अगर कोई नया धंधा शुरू कर रहा है और कोई दूसरा आदमी उसमें पैसा लगा रहा है, पैसा लगाने के बाद, धंधा शुरू होने के बाद वो उस पैसे का कुछ भी हिस्सा लेता है वापस। इक्विटी अगर डाइल्यूट करता है और इक्विटी उसने वापस ट्रांसफर की, डाइल्यूट की, सेल किया, तो उस पर कैपिटल गेन होगा। अच्छा, तो उसको वित्त मंत्री जी ने अबॉलिश किया है। दूसरा जो एक बहुत सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से, कि जो हमारे टैक्स का असेसमेंट है, हम कई बार सुनते हैं कि भाई हमें टैक्स नोटिस आ गया 4-5 साल पहले का, जो हमने 14-15 में कुछ ट्रांजैक्शन किया था उसका नोटिस अभी आ गया। तो उसमें उन्होंने इस बार अनाउंस किया कि टैक्स असेसमेंट 3 साल तक ही रीओपन हो सकता है। उसके बाद अगर रीओपन होना भी है तो उन केसेस में नहीं होगा जहां की टोटल टैक्स लायबिलिटी जो इनकम है वो 50 लाख तक है। तो बहुत बड़ा सेगमेंट के लिए एक बड़ा रिलीफ है। मतलब जो ये एक तो कागज वागज भी संभाल के रखने पड़ते थे जी, और पूरे वो तो रखने पड़े। ऐसा है, देखिए वो तो रखने पड़ेंगे। आपके पास रूल है, वो आपको रखने पड़ेंगे। इस तरह से समझाता हूं बात को कि टैक्स स्क्रूटनी होती है, सब लोग जानते हैं। टैक्स स्क्रूटनी की एक समय सीमा है कि 2 साल तक हो सकती है, लेकिन इस समय सीमा को तोड़ देते थे टैक्स को रीओपन करके असेसमेंट को, सेक्शन 147 में, कि देखिए हम पिछले साल के केसेस खोल रहे हैं। तो सरकार ने कहा बहुत पीछे के केसेस खुल जाते हैं तो एक अनसर्टेनिटी की स्वॉर्ड लटकी रहती है ऊपर सिर पे। तो उन्होंने कहा हम इसको अनसर्टेनिटी को खत्म करना चाहते हैं। जो समय सीमा पहले ज्यादा थी, 10 साल तक थी, उसको हमने कम कर दिया है और 6 साल कर दिया है, 5 साल कर दिया है, 6 साल को भी 5 साल कर दिया है अगर 50 लाख रुपए तक की सिर्फ एस्केप्ड इनकम की आशंका है। जी देखिए, मैं एंजल टैक्स में थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। एंजल टैक्स क्या होता था कि ये ब्लैक मनी का एक बड़ा साधन होता था, जिसमें कि ब्लैक मनी कहीं से आया, आप स्टार्टअप में डाल दीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए, तो घुमाने के काम आता था। वहां पे आप लॉन्डर कर सकते थे पैसे को। और एंजल टैक्स के साथ में दिक्कत क्या थी, ये तो ब्लैक मनी के जो में लिप्त जो लोग थे उनको पनिश करने के लिए आप पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री को पनिश करते थे। इसमें होता क्या था कि जब ये कानून 2012 में आया, उसके बाद अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो, आप एज इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाहो स्टार्टअप में, वो जो कैपिटल आप स्टार्टअप में सपोज 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए, वो स्टार्टअप की इनकम मान ली जाती थी और उस पर सीधे 30% का टैक्स स्टार्टअप को देना पड़ता था। तो ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था। बट आप ये देखिए कितना रिग्रेसिव टैक्सेशन है। कोई स्टार्टअप अगर मार्केट में जा रहा है
और उसमें कोई 1 करोड़ रुपए डाल रहा है तो उसको 70 लाख ही मिल रहे हैं। एक कारण क्या होता था, क्योंकि इसमें एक फेयर मार्केट वैल्यू का एस्टिमेशन का कोई अनलिस्टेड होती है स्टार्टअप, उसमें फेयर मार्केट वैल्यू उसकी शेयर बाजार, उसकी शेयर क्या है उसको एस्टिमेट कर नहीं सकती, इसलिए डिफॉल्ट केस पर उसके ऊपर एंजल टैक्स ठोक दिया जाता था। एक बहुत बड़ा बदलाव उन्होंने आज बताया। ये समझना जरूरी है एंजल टैक्स में कि कितनी, और इस सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, सबके लिए सबसे बड़ा बेन ऑफ कंटेंशन ये होता था, इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। तो तो भारत में स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लगाना पड़ता था उस पे अब टैक्स नहीं लगेगा, उस जो स्टार्टअप को नहीं देना पड़ेगा, डिफॉल्ट टैक्स मान लेते थे, डिफॉल्ट टैक्स मान लिया जाता था। अब टैक्स की बात करें, एक बार स्लैब्स में कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं फिर उन्हीं स्लैब्स पे जाना चाहूंगा कि ये 10 लाख पे 10 लाख तक की आय पे 10,400 रुपए का फायदा हो रहा है, 11 लाख पे भी 10,400 का फायदा हो रहा है, ये ऐसा क्यों पहले नहीं, उससे पहले एक बात जानना जरूरी है। उन्होंने खुद कहा था कि सिर्फ 58% लोग ही न्यू टैक्स रिजीम को यूज कर रहे थे। तो ओल्ड वालों के लिए तो कोई बदलाव है नहीं, 2/3 तो सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। तो जो ओल्ड टैक्स रिजीम कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बदलाव अभी सामने नहीं आया। नहीं, पर वो शिफ्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी कॉस्ट होगी ना शिफ्ट करने की। अगर वो डिडक्शंस ले रहे हैं वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो न्यू टैक्स रिजीम जिनको सूटेबल लगता है उन्हीं की बात हो रही है, उन्हीं को फायदा होगा अगर होगा। और मतलब अभी भी वो न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम तो चल ही नहीं है, वो दोनों मर्ज तो नहीं हुई। खैर, ये 10 लाख रुपए पे 10,400 रुपए का फायदा, 11 लाख पे भी 10,400 का फायदा, क्योंकि वो उतना ही टैक्स पिछली बार भी था 12 के स्लैब। हाँ, 10 से 12 का, पहले 9 से 12 का स्लैब था, अब 10 से 12 का स्लैब हो गया, तो 11 लाख पे तो वही रेट लगेगा, 12 लाख पे भी वही रेट लगेगा, 12 से 15 पे भी वही स्लैब है, 12 से 15 पे भी 20% का स्लैब है, 20% का, पहले भी 20% था। तो 12 लाख अगर आपकी सालाना आय है तो पहले कितना टैक्स था? 93,600। और अब कितना है? 83,000। तो वही 10,400 रुपए, 10,400 के करीबन। और बाकी बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन से मिलेगा ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन से जो 50 से 25 की है, 50 से 75 की है, 75 की है, तो 25,000 रुपए का जो बेनिफिट है उसका जितना भी परसेंट आएगा, 10%, 20% या 30% डिपेंडिंग अपॉन अवर स्लैब रेट, वो उतना एडवांटेज। काफी एक डिमांड थी स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये जो फायदा है ये तो सिर्फ टैक्स का फायदा है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलता है, 25,000। हाँ, ये जो 10,400 का फायदा है ये तो सभी लोगों के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए और ज्यादा फायदा है, उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी फायदा मिलेगा। तो वो फायदा जो है वो भी स्लैब के हिसाब से बदलता चला जाएगा। तो 25, हम जब बात कर रहे हैं कि 10,400 रुपए का फर्क आ रहा है 10 लाख पे, उस पे अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दें डिफरेंट कैलकुलेशन, तो जितना भी जो भी स्लैब रेट है उसके हिसाब से एडवांटेज मिलेगा। अगर 10 लाख तक तो 10% का स्लैब, 10% का ही फायदा होगा, 5 और 10%, तो 2,500 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 2,500 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे 10 लाख तक पे जी, 10 लाख तक की आय पे। 11 लाख पे जो उसका स्लैब रेट था 15% के साथ, हाँ, तो उसको 15% का बेनिफिट मिल जाएगा, 15% का बेनिफिट या उससे कुछ कम या 15%, वो कैलकुलेशन के बेसिस पे होगा जो इतनी जीडीआई आएगी फॉल करेगा वो। और 12 से 15 है तो 20%, 15 से ऊपर है तो 30%, उतना कम होगा। प्लस एक बेनिफिट और दिया, फैमिली पेंशन में जो 15,000 रुपीज की पहले डिडक्शन थी अब वो इंक्रीज कर दी गई। वो तो लेकिन जैसे उन्होंने बताया ना कि वो तो या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी या फैमिली पेंशन मिलेगी, दोनों में से एक ही चीज मिल सकती है। फैमिली पेंशनर्स के लिए थी ना, फैमिली पेंशनर्स के लिए, तो जो फैमिली पेंशनर होगा उसको वो मिलेगी। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात जो हम मिस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात बोली थी आपने, जो मैं सुबह बोली थी, आप किशोर आपका ध्यान में है? किशोर, हाँ, एक बहुत बड़ी बात आज वित्त मंत्री जी ने कही थी, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नहीं, पर एक मैं सिर्फ एक चीज, ये 20 लाख रुपए पे तो 10,400 का फायदा नहीं होगा ना, उसमें तो ज्यादा होगा। अगर आपकी 20 लाख रुपए आय है तब तो, क्योंकि 5 लाख तो 30% पे चला गया। बिल्कुल ठीक बात है, तब तो 17,500 होना चाहिए। नहीं, 17,500 सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ हो रहा है। हाँ, वो स्टैंडर्ड, हाँ बिल्कुल, वो अप टू है लगा बहुत बड़ा, उसके आगे अप टू लगा है, किशोर अप टू को मत भूलिए। किशोर, एक बहुत अभी अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा दें, नौकरी पेशा लोगों को हटा दें, तो 10,400 का ही मैक्सिमम है। 10,400 का मैक्सिमम फायदा है। ये अलग अलग लाख जो आमदनी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लोग इसलिए ये सवाल उठ रहे होंगे जहन में, जब स्क्रीन पर वो देख रहे हैं कि भाई 20 लाख पे भी 10,400 का फायदा है, 10 लाख पे भी 10,400 का फायदा है, 12 लाख पे भी 10,000, ये सब फायदे जो हैं ये आपको तब पड़ रहे हैं जब आप नौकरी पेशा नहीं है। नौकरी पेशा हैं तो 75,000 रुपए पे और टैक्स कम लगेगा। एक बहुत बड़ी बात जो वित्त मंत्री जी ने कही थी, कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट,
आपको ध्यान हो तो मैंने सुबह कहा था कि बहुत बड़े पॉलिसी चेंजेस लाएंगे, तो पूरे एक्ट को ओवरऑल करने की बात हो रही है, तो और 6 महीने में कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं। तो वो ओवरऑल जो होगा उसमें क्या नए कानून लाए जाएंगे, उसमें फेसलेस होगा,